श्री सत्यनारायण स्वामी जय। मो पूज्य ठाकुर श्री श्री अभिराम परमेश्वर देव को स्मरण करी आज आपण सम्मुखें मुझे ठियाई एवं मंचस्थ विशिष्ट विज्ञ आत्मा मान सहित जड़ित हो मो ठाकुरंकर साहित्य रे जोग संपर्क रे कौन से कहते आलोकपात करने को चेष्टा करी मो पक्ष एक दृष्टता कारण मो ठाकुरंकर साहित्य को जेते गभीर भाव में गवेषणा करा उचित ता हो पारनी बर्तमान सुधा किछि किछि व्यक्तित्व बाबाजी रविनारायण दास समय आरंभ होता जो सरलता प्रकाशित होता मुझे संपर्क में कही विशेष समय नष्ट करी ना मु मंचस्थ समस्त को प्रणाम करी आपण मान को प्रणाम करी मोर किनोट एड्रेस जहाँ को कहुच्छी मु पाठ करने को चेष्टा करी यह इंग्राजी रे लेखाही किंतु मु मझे मझे टी ओडिया रे कहबी से आपण मानकर अनुमति चाहूँगी हाथ कागजर देखी आपण मैंने भय करतुनि मु विशेष आपण मान को समय नेबी ना आपण को समय नेबी ना श्री श्री ठाकुर आज्ञा रे मु आरंभ करुच्ची। टुडे yoga has already become a way of life. Ishwar, Sri Krishna, in the Bhagavad Gita, suggested to Arjuna to forget the torment caused by dukkha or Sankhya Karika as it is observed in Sutra 1. Yoga means the union between Paramatma and Jivatma. Yoga means the union between Paramatma and Jivatma present in the body of an individual. In thought, that is Chinta, and in consciousness, that is Chetana. There is union between the devotee and God, or the state of their united form. When we are detached and free from our worldly karma or karma chakra, only to meditate upon Ishvara, it is yoga. It is the spiritual science. In Sanatana Dharma Shastras, the reference to Vidya and Sadhana direct us to practice yoga. It may be karma or jnana or bhakti or sharira sadhana. In all these ways, Paramatma unites with Jivatma. And
this process of union is known as yoga. Therefore, the 18 chapters in the Bhagavad Gita, as narrated by Ishvara Sri Krishna, have laid the foundation of yoga, for which the Bhagavad Gita is also known as Yoga Shastra. तेणु भगवद गीता को आमे योग शास्त्र हिसाब से ग्रहण करी आसीचु सबु सनातन धर्मी धर्मर जो माने फॉलोअर्स जो माने मानती सनातन धर्म को से माने भगवद गीता को कर्मयोग हिसाब से ग्रहण कर योग शास्त्र हिसाब से ग्रहण कर To get into the path of yoga, one has to prepare himself throughout the day during one of the following activities. Tapa, that we utter Omkara, Om Japa. Then Swadhyaya, that is study by yourself, on your own self. आपण जेतबेले निजको निज द्वारा बुझा को चेष्टा करते कहारी द्वारा नुहे निज द्वारा जे मु किए मु कहीं बंची मु कौन कर्म करुच्ची इत्यादि देन ईश्वर प्रणिधान दैट इज मेडिटेटिंग ईश्वर को ध्यानस्थ अवस्था रे बुझा को चेष्टा करिबा दैट इज meditation, meditating ईश्वर. Yoga Shastra or Yoga Sutra defines ईश्वर as a विशेष पुरुष. ईश्वर होचंती जने विशेष पुरुष, unaffected by klesha or affliction. I have translated klesha as affliction, if I am correct. Karma and vipaka, that is the fruit of or result of your karma, your action, or sanskara. In Ishvara, the seed of omniscience has reached the utmost development which is unsurpassed. The Guru of former gurus, the guru of the former gurus, जेमती मो गुरु श्री अभिराम परमहंस देव तांकर हुए तो कई गुरु थे. एज ईश्वर इज नॉट लिमिटेड बाय काल, दैट इज टाइम. ईश्वर इज प्रणव, दैट इज ओंकार. ईश्वर इज ओंकार. It should be repeated time and again. Once one is steady in Kriya Yoga, he should enter into Ashtanga Yoga, such as Yama, that is ethics of behavior, Niyama, that is observances towards Shaucha, like cleaning our body, everything that my Thakur has always emphasized that whenever you pray God or Ishwara, you must clean yourself first. शरीर को आगे सफा कर, सुस्थ रख एवं एक सुस्थ शरीर धरी एक सुस्थ श्रृंखलित सफा जहाँ कह जाए कलोकियल लैंग्वेज रे शरीर को सफा करी ठाकुर को प्रणाम कर, भगवान को चिंता कर. तेणु से जो शौच आम से गुरुत्व दौरान. देन आसन आम आसन करुचे आसन. देन जोटा ठाकुर बहुत एम्फासिस करता हूँ प्राणायाम. तापरे प्राणायाम हूँ कंट्रोलिंग दि प्राण. देन प्रत्याहार,
That is a process of retracting the sensory experiences derived from external objects. Then ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନକୁ ଯୋଗ ହିସାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଲେସନ୍, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ସମାଧି। That is translated by me as total absorption. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା absorb ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। That is total absorption. ତେଣୁ according to Yoga Shastra, when all fluctuations cease, the arrested state of mind with only sanskara in them remain. ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ସଂସ୍କାର କରିଛେ ଜୀବନରେ ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଏ। The yogi, after perfecting dhyana stage, starts with Sabija Samadhi, where an object of meditation is present. ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ଦୁଇ ଦୃଢ଼ତା ମଝି ସ୍ଥାନକୁ ଆମ ଦୁଇ ଆଖିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛେ ଏବଂ ଯେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ସେଟା କରିପାରିବେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବିଜ ସମାଧି, where an object of meditation is present. Once he perfects that stage, he is in samprajnanata, and at that time all his tamas gunas, ଆମର ଯେତେ ତାମସିକ ଗୁଣ ଅଛି, get destroyed. He is then called a sattva purusha, sattva purusha. Then he goes to the next stage when he does not need an object to meditate. When he masters that phase, he is said to be in a asamagyanata samadhi, all called, you become a muni. In that stage, one becomes a muni. At that moment, if he discards his body, then he merges with Prakriti and becomes a Devata. The Muni becomes Devata. Depending on his karma, he remains in that state for a limited time and then he takes rebirth. And from childhood, his saintly qualities are observed by others. मैं टिके कहे ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଦିନ ନାଁ ଥିଲା ବିନୋରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କର୍ମଳାରେ ଅବତାର ନେଇ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ, ଅବତାର ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଗହଣରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକି ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ଇଏ କିଏ। ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସାଧନା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଜଗତଗୁରୁ ରୂପରେ, ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ଦେବ ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ।
तेणु पूर्वजन्मर जो संस्कार तांको भितरे देखा जाइथिला तांको पिला दिनरु जेतेबेले तांको बिनोरी बोली संबोधन करथुले समस्त. He continued in the path of dharma and sadhana at a very young age, as he was detached from the products of Prakriti. It is called the Kaivalya stage or Mukti. Kaivalya is Mukti or Moksha. In the literature and philosophy of Sri Thakura, Sri Abhiram Paramahansadev, the dual streams behind the tattva of Pinda and Brahmanda. So ठाकुर दर्शन आरंभ है पिंड ब्रह्मांड. मु जहाँ उपलब्धि करती कहूँ ठीक हो पारे भूल हो पारे. पिंड एंड ब्रह्मांड आर एक्सप्लेन्ड. Such tattva or philosophy is also present in the divine and religious scriptures or literature of great Mahapurushas, preachers of Sanatana Dharma. These tattvas look similar, but the duality existing in the religious streams of Dharma, as depicted by Sri Thakura, has its own identity and individuality in comparison to other preachers of his time, of his lifetime. तेणु भारतर अन्य साधु सन्तठू मो ठाकुर तत्व धाराटा भिन्न यही स्टेज यही समय से सब गोटे अलग आइडेंटिटी गोटे अलग इंडिविजुअलिटी खोजुले निजस्व परिचय खोजुले एवं से देकी जाइछन्ति. मो पिलादिन देखी संस्पर्श आसिकी से किपरि भाव में शिशु मान निजर आइडेंटिटी एवं इंडिविजुअलिटी दे जाइछन्ति. The kriya that connects an individual with Ishvara in yoga is yoga. Is yoga. The kriya that connects an individual with Ishvara is yoga. It directs all Prakriti and Indriyas towards Ishvara until they are totally absorbed in him. The devotee following such path sits in deep meditation, dhyana yoga, controlling his mind to achieve siddhi or brahma darshana or bhagavat darshana. तेणु भगवत दर्शन पायापाई ब्रह्म दर्शन पायापाई जो सिद्धि दरकार ताहा ठाकुर कलि भागवत लिखुंट. ध्यान जग तू कर बसी कोटेशन ठाकुर ध्यान जग को कर ध्यान जग तू कर बसी तेबे देखिबु ब्रह्म राशि. ठीक कही एटा कलि भागवत मु उद्धार कर अनुवाद कर. इफ यू सिट इन डीप ध्यान और मेडिटेशन देन ओनली यू कैन सी द ब्रह्म. Indulged in the worldly karma, he attains emancipation, getting superhuman quality to unite with Ishvara and enjoy divine experiences and feelings. The mind is transformed into divine consciousness. It is a very important thing for Thakur. The mind is transformed into divine consciousness. It is a new knowledge, a fresh awakening of the soul. आम आत्मार गोटे पुनर्जागरण अवस्था यहाँ जो मैंने ठाकुर संस्पर्श आसो तत्व संस्पर्श आसो मो पूज्य आराध्य वैष्णव मंडल जो मैंने अच्छा समस्ते यहाँ निश्चय अनुभव करते. तेणु से जो एवेकनिंग ऑफ द सोल आत्मार गोटे पुनर्जागरण अवस्था जोटा से ठाकुर दे आमको
The devotee gets the sight of Ishvara and feels him within him due to such consciousness. In the words of Sri Thakur in Kali Bhagavata, Je mana sehi chaitanya, Je mana sehi chaitanya, Je jiva se sina parama. ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯେ ମନ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ, ଯେ ଜୀବ ସେ ସିନା ପରମ। ମନ ହଇଲା ଚୈତନ୍ୟ, ମନ ହଇଲା ଚୈତନ୍ୟ ହେତୁରେ ଦେଖ ଭଗବାନ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲୋକିଆଲ, ମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅପାଠୁଆ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଟିପଚିହ୍ନ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାବେଳେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବି ମାଡ଼ି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଜନ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭିତରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପାଇଁ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅତି ସରଳ ସୁମଧୁର ଭିତରେ ଆକୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭଜନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିବେ ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇକି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେବଳ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। The mind is consciousness, the jiva is supreme and absolute. When the mind is conscious, you can see Ishvara. You can see Ishvara. Again, मन जेतेबेले चैतन्य होइब करिब प्रभु दर्शन, एटा भजन भावामृत आनी भजन तत्वामृत आनी। When your mind will be conscious, you will get the sight of Ishvara. You will get the sight of Ishvara. बोल कहली कि बाबा, in sadhana of Thakur Sri Abhiram, the mainstream is Samarpana, that is dedicated to surrender. Samarpana Sutra ta kuhauchi. When the body is in deep meditation, Dhyana Yoga, to surrender, Samarpana Yoga, in order to merge with Parama Brahma, is called as Sampurna Yoga. ठाकुर का भाषा रे ता होचे संपूर्ण योग। जमती पुणी कली भागवत कहले सकल समर्पिण देला एकांगे हरिण को भजिला, अर्थात डेडिकेटेड एवरीथिंग, प्रेड हरि with one body and soul. With one body and soul, he prayed Holi by dedicating everything. मुझे संकुचित करी पढ़ुची आप टिके धैर्य धरिए. When a devotee is completely absorbed in yoga, he does not see anything, anyone, but sees Ishvara only. तेणु योगरे आम जो केवल ईश्वर को ही देखा पाऊँ, से जे भी हूँ, शिव हूँ, श्रीकृष्ण हूँ, बा राम हूँ, श्रीराम हूँ, कि आमर जगन्नाथ हूँ, जे भी हूँ, बा आम ठाकुर श्री अभिराम परमहंस हूँ, आपन जदि आपण ध्यान योग बल तांकु देखिपारे, ताहले अनुभव करिपारे, ताहले ठाकुर कहते पुणी कली भागवत संसारे एका भावग्राही ता छड़ा किसी न दिश। तेणु संसार में जड़े केवल से हूँ भावग्राही, आउ मत कि दिशुना। In this world only, भावग्राही, one who is able to understand another's thoughts, भावग्राही के
जे अन्यर थॉट को भावना को बुझी पारे. He exists. No one else is visible except him. Therefore, he has shown the path of sadhana. साधन उपाय कौन ठाकुर बुझाऊँच. एटा हूँ भजन भावामृत पाई. धर तांकु लयांगरे, भल भाव शुणु. धर तांकु लयांगरे अध ऊर्ध्व मध्य ठारे, अध ऊर्ध्व मध्य ठारे मन को पवने नहीं लगाओ ध्यान. मन को पवने नहीं लगाओ ध्यान. चंद्र सूर्य को तू नहीं, चंद्र सूर्य को तू नहीं भूरु मध्य थई. भूरु मध्यटा हूँ स्थान. भूरु मध्य थई देखिबू नित्य राहास गोलक धाम. सेतेबेले जाइकी तुम्हें आपण मैंने रासलीला केमती होउची वृंदावन में आप देखिपारे. रासलीला से केमती होउची जो कि स्वयं प्रभु ईश्वर श्रीकृष्ण संलीन अवस्था हजि जाउछन्ति श्रीराम एवं गोपी गोपिका गणक भितर. यह कम बड़ कथा नुहे. वृंदावन गोपी आ गोपिका माने जो बांधी रखी रजुरे श्रीकृष्ण को, जे कि ईश्वर स्वयं ईश्वर को बांधिकी रखी निज अईठा खुले सांग मैंने खाऊले ठाकुर. आम ठाकुर अभिराम परमहंस ठीक से ही थे. तेणु जदि तत्वदर्शन कहुए बड़ महापुरुष अंतत मुझे बही पढ़ी साधारण भाव मनीष हिसाब से मुझे पाई ना कौटी. सो लेट मी ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश फॉर यू. Concentrate holding him on your lower part of the body, looking at his middle, then upper part of his body. तो तलू आपण ऊपर को जाऊँ. कंट्रोल योर ब्रेथ टू मेडिटेट. निश्वास को कंट्रोल करंतु. कंट्रोल योर ब्रेथ इन टू मेडिटेट. Keep the moon and sun on the middle of your two eyebrows. सूर्य चंद्र को निजर भ्रूर मझिरे रखंतु. You can see the divine Rasalila. Then only you can see Rasalila. So, by controlling the wind of prana, concentrating upon the middle of the two eyes, raising consciousness, the sadhaka reaches the state of samadhi and beholds Parama Brahma and deeply feels it. Sri Thakur has accepted it as a divine moment to behold the Rasalila in Golaka Dhama. Thakur Sri Abhiram's method of yoga mainly is based upon controlling the respiration by sadhana. जो निश्वास प्रश्वास को कंट्रोल करवा शक्ति तांकर साधनार मार्ग थिला, फिनान्स मार्ग थिला. If a devotee can control his respiration system slowly, he transcends in his yogic sadhana, obeying the rules as prescribed by his guru. If one can control the wind during respiration to raise the power of Kundalini, जहाँ को आमे को फीमेल सर्पेंट इन इंग्लिश, इन द सर्कल ऑफ मूलधार. कुंडली को आमको रेस करिया पड़ियो मूलधार बाय पेनिट्रेटिंग द सदा चक्र, द सदा चक्र, दैट इज द 6 सर्कल्स, and then by concentrating upon the pranavayu, the breath of life, keeping the mind and wit
in the Sahasra Chakra, that is the 1,000 circles. Consistently together is the state of Samadhi, that is deep meditation of yoga. It is the way to get the sight of Maharasa, then only one is able to see Satchidananda, Paramatma, Param Brahma. ताकु ठाकुर कहले सहस्रा चक्र रे देख जाई, सहस्रा चक्र रे देख जाई, एकरु आउ दुई नाई, जणे मात्र आपण देखिबे duality नाई, दुई नाई. That is translated in English, get into the circle with the 1,000 eyes, you will get the sight of one, not even two. Sri Thakur always directed his devotees to control the breath of life or pranavayu passing through the nose constantly, and then with the help of Jnana Netra or Trikuta, control consciousness, and then to get into the state of jhana, that is meditation. It is also a simple way of yoga sadhana, to be precise. कहे अखिराम धर बाई ज्ञान नेत्रे दियो देख जाई, अल्प सुख में साध्य करिण पाइबा. Abhiram tells to control your breath and to see Ishwara, your wise eyes, by performing the fine sadhana. बसी रह पद्मासने, नेत्र रख ऊर्ध्व स्थाने, मन रख पुल करे, कुंभक डोरी रे बांध, मिलन से जुगल रे. तेणु मत संक्षिप्त करने को कही मुझे छाड़देवी. इन भजन तत्वामृत, Sri Thakur has emphasized upon pranayam and dhyana as a yogic method to realize the divine presence of Ishwara as only one. ଯେତେବେଳେ आखि रहिब लाखि तेबे तू देखिबु पद्म आखिंकी, भ्रुभंगी सूत्र रे देख भावग्राही, भुरु मध्य रे छंती उभा होई, त्रिभुवन सीना शून्य दिशय. तेणु त्रिभुवन आमको शून्य दिशुचे, कई जमी कुआड़े ना किंतु समस्ते ठीक से रहा कथा रही. यहीपरि मो ठाकुरकर विभिन्न साहित्यिक रचनावली सब आत्मा को बसी कर ध्यान, आत्मा रूपी नारायण, जोड़ा टे दरकार आपंकर जानापी से केवल कहीदे. आत्मा को बसी कर ध्यान, आत्मा रूपी नारायण, चैतन्य रूपरे देख जीव परम अभिन्न तत्वमसी साधन. आ सबुठ मजा कथा कहते भजन नीलपद्म यहाँ गोटे भल भाव शुणु मु सारी. कुंभक सूत्र रे बंकुनाल गलिबु, बंकुनाल माने कार्ड ड्रेन बा केनाल, जो केनालटा बंका टंका हो जाए. कुंभक सूत्र रे बंकुनाल गलिबु, अर्थ मात्र भेद करी अजपा मंत्र रे, अजपा जाई जपी जपी मध्य जाए को जीवु टानेल रो, सुषुप्ना खोली जीव आपे आपे, सुषुप्ना खोली जीव अजपा सूत्र रे, सहस्र दल कमले देखिबु कन्हाई, आखि जीव लाखि केड़ी चंद्रिका. तू से देखिबु जे कन्हई बसचंती पद्मासन रे पद्म फूल उपरे, एवं तो आखि लाखि जीव स्थिर हो जीव, सबु पृथ्वीर सबु किछि माया जाल बंधन सब भूली जीव. तू यहाँ हूँ योग ठाकुरंकर. मु कनक्लूड कर बर्तमान मत वार्निंग दिगला. ये तत्वटा एत बड़ जिनस
ताकू जते संक्षिप्त करने चेष्टा करी तथापि हारीगली द फिलोसफी और तत्व ज्ञान ऑफ ठाकुर श्री अभिराम is based upon the concept of yoga as prescribed in Sankhya Karika Sutra. As discussed earlier, ମୁଁ introduction से कथा कही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण एवं ध्यान एंड समाधिस्थ अवस्था. A true yogi passes through all these stages in life to perfect his knowledge or jnana to realize the supreme Brahma and his divine power in him. Then only his earthly soul is able to unite with the supreme soul. It is an experiment that continues to transform an earthly human being. I repeat, it is an experiment to transform the earthly human beings like us, ame sabu parthiva manisha, being into ईश्वर. हमको से ईश्वर अवस्था को नहीं जावा पाई एटा होची गोटे प्रचेष्टा with all his power and divine strength to save the world. ए पृथ्वी को बंचाई रखा को हेले आज्ञा आमको स्टेज को जीवाक पड़ो. आपण बाध्य जीवाई एवं वर्तमान जहाँ जना पड़ी आम स्टाटिस्टिक्स जहाँ देखा जाऊँगी जे पृथ्वीर अधिकांश देश रे योग साधना आरंभ हो कहीं आरंभ होना वर्तमान आधुनिक समाज जो घृणित मुझे वार्डटा व्यवहार कर मत रागवे एटा गोटे घृणित आकर्षण जो गुड़ाक आम घृणा करा कथा से गुड़ाक कुंडे पकाचे जो गुड़ाक भल पाया कथा ताको आम तुच्छ भाव में नईरे भसई दूचे. किंतु वर्तमान पृथ्वी मनीष मैंने रियलाइज कर गोटे साधारण भाव में कहबी आपण मैंने समस्ते माँ भौणी भाई भाई समस्ते अच्छा आपण मार्क करंतु गोटे जिनस वर्तमान प्रत्येक मंदिर रे सनातन धर्म प्रत्येक मंदिर रे केतिकी भिड़ होउची मो पिलादिले मु देखु नथिले. अधिकांश से स्त्री नारी होंतु पुरुष होंतु भिड़ कंट्रोल बाहर को चल जाउची. आधुनिक सरकार अनिश्वासी हो जाउछन जे एमन केमती मु संभाळी कारण ए सरकार को मन भितर से ऐश्वरिक चिंताधारा चेतना जागिवाई आउ टे समय लगे आसला आस्ते आस्ते आउ टे लगे. तेणु मु शेष केवल गोटे लाइन कहबी दैट डिवाइन स्ट्रेंथ टू सेव द वर्ल्ड. इनफैक्ट ये जो भगवान जो पृथ्वी को रक्षा करने को चेष्टा कर कौन श्री अरविंद एक कथा कहते that is the life divine. श्री अरविंद का फिलोसफी रे सेटा को द लाइफ डिवाइन बोली वर्णना कर स्वाधीनता संग्राम को आखि आगे रखिक कहते भारत स्वाधीन हम कि ना किंतु वर्तमान समय रे मो ठाकुर कहते जे तू ध्यान कर प्राणायाम कर निजर निश्वास को कंट्रोल कर निजर मन को दुई भ्रूर मध्य जगार आबद्ध कर एवं से ध्यानस्थ अवस्था तू ईश्वर को देखिपारू एवं जदि तू ईश्वर को देखिपारू जदि डॉक्टर स्वाई देखी मुझे किंतु आम समस्ते चेष्टा करिया उचित जे आम किपरि ठाकुरंकर योग सूत्र को फॉलो करी बा ताको पाठ करी आम केमती से स्थान को जापर मत आपण मैंने शुणी सही मो कथा को से मुझे पाखे चिर ऋणी रही अनेक कथा मुझे लिखी पर पढ़े आपण मैंने मैगजीन रे तेणु मत क्षमा करेंगे मु ठाकुरंकर तत्व ज्ञान उपरे कहवा को जो भ्रष्टता करी से मत आपण मैंने क्षमा देवे मो भावुची मो ठाकुर निश्चय क्षमा देवे
ସେତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।